हेलो एवरीवन, और आज मैं बात कर रहा हूँ टू ऑल द गेमर्स एंड द नॉन गेमर्स आउट देयर, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द सोनी PS5 एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने जो सोनी प्लेस्टेशन 5 है उसके लॉन्च को बहुत बिग डील बना दिया था। बहुत ही ऑर्डिनरी हमड्रम टाइप का लॉन्च और टीज भी उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया और काफ़ी केओटिक है उनका प्रोडक्ट रिलीज, जैसे कि टेरेबल सप्लाई सिचुएशन है, इम्पॉसिबल टू बाय द PS5 इन इंडिया इवन नाउ। सुना है मार्च में फिर से आएंगे नए यूनिट्स। एम्बैरेसिंग गेम फॉपास भी हुए हैं, सर्वर भी उनके इतने अच्छे नहीं चले। लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, PS5 जो लॉन्च हुआ है काफ़ी ढीला ढाला हुआ है, बट फॉर द पर्पस ये जो वीडियो मैं कर रहा हूँ ना उसका पर्पस कुछ अलग है। पर्पस हुआ है टू आंसर द बिग क्वेश्चन जो कोई और बात ही नहीं कर रहा है, नो वन इज आंसरिंग। इज द PS5 वर्थ इट टू बाय? वर्थ इट टू बाय नाउ और वेट फॉर द गेम्स टू कैच अप? और इज द PS5 बेटर देन स्पेंडिंग अबाउट 50,000 रुपीज टू बिल्ड अ कस्टम मेड गेमिंग पीसी? तो सबके बारे में बात करेंगे, बिकॉज वाइल द PS5 has got glowing reviews, इसका जो हार्डवेयर है सचमुच बहुत ही कमाल का है। कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा है अबाउट द अदर बिग प्रॉब्लम, जैसे कि देयर आर नो रियल गेम्स टू पुश द हार्डवेयर टू एक्चुअली परफॉर्म जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। येस, दिस इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर डिस्गाइज्ड एज अ गेमिंग कंसोल, but where are the super games to push this supercomputer? Because you see, हार्डवेयर तो बिल्कुल यहीं पे है, बट शुड यू बाय इट टुडे और वेट फॉर एटलीस्ट another 6 months फॉर द गेम्स टू कैच अप? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जैसे मैंने कहा, सारे सवालों का जवाब आज यहाँ पे। देखिए, हार्डवेयर यहाँ पे आ चुका है मेरे पास, एंड व्हाइल इट लुक्स वेरी गुड स्टैंडिंग स्ट्रेट, इसका एक प्रॉपर तरीका भी है टू प्लेस इट ऑन इट्स साइड। इट्स नॉट अ स्मॉल यूनिट, इट विल एक्चुअली रिक्वायर कुछ आपको सोचना पड़ेगा, कुछ थॉट देनी पड़ेगी, प्रोसेस देनी पड़ेगी ऑन हाउ टू प्लेस इट राइट। नाउ लेट्स फर्स्ट क्विकली टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस। हर कंसोल जो है, ऑब्वियसली जितने भी सोनी के कंसोल आए हैं PS5 के, दे आर ऑब्वियसली मोर पावरफुल देन द प्रीवियस जनरेशन। PS5 लेकिन कुछ ऐसा अलग कर रहा है दैट इज नॉट हैपेंड बिफोर। यू सी, एवरी कंसोल बिफोर हैज हैड वन प्रॉब्लम। जब लॉन्च प्राइस आई थी ना PS2, 3, 4, you could actually assemble a PC that could give you similar performance। और कई लोग ये हमेशा डिबेट करते थे कि why should I buy the PS5, I can get a PC, but not this time। For roughly 50,000 rupees, आपका जो custom built gaming computer है that cannot keep pace with this, the PS5। This has some serious power under the hood। Specs जो हाँ absolutely insane है, build is awesome। I mean, this could actually do 8K and 120 frames per second if needed। So specs and hardware बहुत easy, सवाल का जवाब है incredible। Now there are two variants, with the only difference mainly being एक में physical drive है और एक में digital storage है। Now I prefer having the physical disk because बहुत सारे फायदे आ जाते हैं उसके। I hate having to manage digital space and worrying about कब खत्म हो रहा है, storage expansion किस चीज़ के साथ करनी है, fiddly stuff नहीं होना चाहिए। When I want a game, I want a game। Now even though जो main game है that is always copied to the internal storage even if you're actually using a disk, but like I said, the big question, disk or no disk, I think disk। Now let's get inside now। देखिए, the UI is absolutely gorgeous। क्या यूजर इंटरफेस है। It populates your screen with a beautiful artwork from your game and it's done very smartly। जो visuals हैं, they are very pretty। You really start anticipating कि actual game क्या होगी even before you get into the game। So full marks to Sony on the user interface। जो media tab है, it lets you browse between your entertainment apps and all of those other things। इसमें Dolby Vision नहीं है, मैं आपको फिर से ये बता दूं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं है। इसमें HDR10 जरूर है। Now let's just go back to what really matters, the gaming part of it। Astro's Playroom जो है, it comes pre-installed and it's actually a very very good game that you should play before you do anything else, because it will kind of teach you the potential of the new DualSense controllers, and they are amazing। These controllers, fantastic ergonomics, absolutely right। They are weighted beautifully, they fit your hand beautifully, very very nice, and they don't let you tire easily even with long term gaming। और इन controllers में एक बहुत interesting चीज़ है, they've actually become very immersive। The way the controller reacts, not just by vibration, उन्होंने नई चीज़ डाली है that even the button pressing is resistive now। मैं आपको एक बहुत ही interesting example देता हूँ। ये जो buttons हैं, you will find the buttons much harder to press and control if you, let's say, you're operating a very tired player in FIFA।
लेकिन it will suddenly change to easy peasy, very good control as soon as you switch to a substitution. You get a fresh player out there. So now the buttons actually react to that. That's insane, but also how good it is. और जो Astro Playroom is the best game to experience all this, because इस game में they've actually designed it to show off the skills of the controller and the rest of the hardware. You can now feel whenever the environment actually reacts with you. I absolutely loved it. Sony, well done on that. It's like being inside a 7D movie, but with a really cool controller doing most of the heavy lifting. So I really enjoyed this part. चलो बात करते हैं about some of the games. Now, जो available games हैं that play at 4K at 30 frames per second, no problem at all. There are games which are optimized 60 frames per second. Those are also great. But one of the areas जहाँ पे आपको थोड़ी सी problem आएगी, that is with some backward compatibility. अब इसके बारे में बहुत सारी debate चल रही है, but I have found that there are some compatibility issues. मैं समझाता हूँ. Older games, which means PS4 games, they will play on this, and you'll see अगर when they play, they've gotten much better in performance. But the games need to have received an update to make the upgrade to PS5 more cohesive, more smoother. Also, getting saved files from PS4 to the PS5 is still a nightmare. Now, two kind of people will actually buy the PS5 right now in the beginning. One है वही old gamer who actually has PS4 games and now they want to game on this new, more powerful hardware. You'll have to wait. You'll have to be a little bit more patient जब तक ये सारे जो bugs हैं ये iron out नहीं हो जाते. हो जाएंगे, there's no problem, but you'll have to be a little patient. Sorry, that's the actual truth. ज़्यादा लोग आपको नहीं बताएंगे ये. दूसरे वो टाइप के गेमर्स होंगे that will actually start off with the PS5 from scratch. They don't care कि पुरानी games हैं नहीं हैं. They don't care about PS4 or saved files. You will be much better off. You'll be very less frustrated. Still not perfect though. Sony के servers में थोड़ी सी problem है. Super slow चल रहे हैं. कभी-कभी downloads are taking a very long time, and some games are still a little buggy. But when it works, the game is downloaded, it's loaded up properly, it's absolutely gorgeous, glorious. But the PlayStation universe is kind of becoming harder to justify a little. And what pricey होए जा रहा है to actually survive inside. Cost of games is rising. There is no Game Pass-like solution. मतलब जो easy नहीं है for easy peace of mind. And it's the titles that actually define your loyalty to these consoles. And as of now, there is nothing so amazing, so exciting that you forget to breathe. मतलब वो जो killer game है ना for the PS5 अभी तक नहीं निकलेगी ज़रूर, but it's not there. A game that pushes the envelope, pushes the console to deliver. Hopefully it will happen very soon. Thus, if you're not a PS fanboy or a PS gaming fanatic or aren't being able to get a PS5 right now, आप काफी frustrated हैं, park your frustration for another few months and get it when the games justify the hype of this console. बहुत सारी upcoming games हैं. There are many that I'm really looking forward to. Which one do you think is going to be the defining game for the PS5? And which one do you think is better? ये है ना सबसे बड़ा सवाल. New Xbox जो आया है, that is better or the new PS5? Well, that part I will answer in another video coming up very soon.